We start the lecture with a review of the last week and then we move towards today's topic. In the last week, we started finite volume analysis, which is the last chapter of this course. In finite control volume analysis, we basically talked about the energy equation. Okay. And we discussed the energy equation. In energy equation, we discussed its application with regards to the fixed non-deforming control volume. And we also talked about the application of the momentum equation on moving and deforming control volume. These control volumes are basically based on the assumption of the Reynolds transport theorem. हमने जो है energy equation, sorry, it was not the energy equation, it was the continuity equation. We discussed the continuity equation. Discussing the continuity equation, and we drive this continuity equation based on the Reynolds transport theorem. So, any question from last week lectures? Any query or any question from the last week? Is everything clear? Yes, sir. Yes. Okay, today we are going to discuss the momentum equation. We just built some background to it in the last lecture, but start again. Momentum equation will also be based on the Reynolds transport theorem. That is, we'll be converting the system approach into the control volume approach or the Lagrange approach into the Euler approach. We know that in Reynolds transport theorem there is some property B, the capital B. If we write B system equal to momentum, that is P, then small b, which is an intensive property, that would be equal to velocity, right? And if we take the Reynolds transport theorem and put this in that Reynolds transport theorem, we'll get dp by dt equal to the integral over the control volume, and this integral will be based on time derivative partial by rho into small b, which is now velocity vector, the times differential of the volume, plus integral over the control surface into rho b. Again, b is velocity, so we write the velocity vector here into v dot n. So velocity vector dot product with the area normal vector into dA. So this is basically your momentum equation. What is time rate of momentum? You would have encountered this at some stage of your physics or dynamics. What is time rate change of momentum? dp. What is dp by dt? Force. It is force, yes. So the momentum equation is basically telling us the force. It is a vector form of the force. So momentum equation is a vector equation is equal to this. That is time rate of change of the momentum plus the net momentum into the control volume or out of the control volume. The net rate of momentum into the control volume and out of the control volume. So basically the result of this equation would be three components of the force vector, that is fx I plus f by j plus f z k. Now it is important to discuss this component of the momentum equation, that is the rate of momentum coming into the control volume and going out of the control volume. The first term in most of the cases will be zero when the control volume is fixed and the flow is steady flow. So the time rate of change of the momentum will be zero in most of the cases when the flow is
steady flow, and the control volume is a fixed control volume. It is important to discuss the direction of this component. So we say that the velocity is uniform, area is uniform, and velocity is perpendicular control surface, and density is constant. Then what will happen? You can write this term as m dot, that is the mass flow rate, into v out, that is the velocity from the control surface, that is out, and minus v in. This is for single inlet and single outlet. If there are multiple inlets and multiple outlets, then we can write it as summation m dot out v out, that is all the outlets, momentum coming out from all the outlets, minus summation m dot in into v in. Clear? Is it clear? तमाम चीजें मैंने आपको समझा दी हैं. So if the velocity across individual stream is uniform, fluid density across individual stream is uniform, and the control surface is perpendicular to the fluid directions, then we can simplify over second term of the control surface term as m dot into v out minus v in. Or if it is more than one inlet and more than one outlet, then we can write the summation of all the inlets and outlets for this term. But now there is one thing. As the momentum or the linear momentum is a directional thing, it's a vector equation. So we need to understand the sign of the momentum entering into the control volume and momentum going out of the control volume. For that, we take this figure and we try to understand what's happening when this term will be positive and when it will be negative. Okay. So basically, we are interested in calculating the term v into v dot n, the sign of this term. Now, as the velocity is a vector and momentum is also a vector, and the vectors depends upon the coordinate direction. So we need to see what's the coordinate direction and what is happening. So we take this first term here. V is in the negative direction and n is in the positive y direction. So v dot n will be negative, right? So v dot n will be negative. But as velocity is also in negative direction because it will be in the negative y direction. So the product of v into v dot n will always be positive, right? ठीक है, समझ आ रही है चीज? Is it clear? सर ये पॉइंट लास्ट बार रिपीट कर देते हैं. Basically, we are interested in calculating the sign of this term v into v dot n. Okay, हम इस term का sign calculate करना चाहते हैं, इसको हमने circle किया. For that, there are two components: the dot product of v dot n and the sign of v itself. जो sign of v है वो depend करता है आपकी coordinate direction पे. So for this first surface here, this is my first लिख रहा हूँ. For this first surface, we see that v is in the negative direction, right? And n is in the positive y direction. So v dot n will be negative. ऐसे ही v dot n will be negative. Yes, but v itself is also negative. ठीक है, तो जब नेगेटिव को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल साइन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव. क्लियर? So for the second surface, v is in the positive direction, n is in the positive direction, so v dot n will be
positive, and because v is in the positive direction, so positive multiplied by positive again will have the same result, that is v into v dot n will be positive. Clear? Now we talk about the negative results. Okay, here in the third surface, here v is in the negative direction, n is in the negative direction, so negative negative will give us a positive result, but v itself is in negative direction, so negative multiplied by positive will be negative. So overall that product will be negative, that is v into v dot n will be less than 0, it will have a negative sign. Another case can be when v is positive, that is velocity is going into the control surface, that is there is inflow, but n will be negative, so v dot n will be negative. But as v is positive, so v multiplied by v dot n will be negative overall. So we'll have a negative momentum inflow. Clear? इसकी समझ आ गई ये चीज? Yes, sir. Okay. Now, if the control surface is perpendicular direction of a fluid entering or leaving the control surface, then the surface forces that will be exerted on the fluid or by the fluid on the control volume will be pressure force. Clear? Because momentum is because of a force. The result of momentum equation is a force, so that will take that momentum as a force. So in most of the cases when the surface is perpendicular to the direction of the fluid entering or leaving the control surface, then the force exerted by this fluid will be assumed to be a pressure force. And the sign of these forces depend on your coordinate axis. अब जो भी coordinate axis define करेंगे, you will take these forces according sign of these forces according to that coordinate axis. It will be more clear अगर हम इसकी related problem solve करते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा. ठीक है? यहाँ तक किसी का question हो तो उसको हम discuss करते हैं, otherwise we move forward. Clear? Okay, here we solve a problem related to momentum equation in order to better have its understanding. We have water that is flowing steadily through a horizontal pipe with 180-degree bend. Basically, water enters from here, then there is a 180-degree bend, and water comes out from this side. The pipe cross-section area is constant at 0.01 meters square. Thus, cross-section area of this pipe is 0.01 meters square, and the water velocity is assumed to be 15 meters per second. That is the velocity. Let's say there is a mismatch between the figure and the question. We say it's 15 meters per second. Go with the units of the question. It's 15 meters per second entering and leaving the control volume at a uniform velocity. The inlet and outlet velocity are same as 15 meters per second. The units are SI units, and the area is 0.01 meters square. The water velocity is assumed to be 15 meters per second. The absolute pressure at the entrance and exit are 200 kilopascals and 160 kilopascals respectively. What entering force is required to hold the pipe in place? Basically 180 degree का pipe है, उसमें 15 मीटर पर सेकंड से वाटर एंटर हो रहा है, लीव कर रहा है, और जो प्रेशर है एंट्रेंस पे 200 kilopascals और एग्जिट पे 160 kilopascals है. You are required to calculate the force that is required to hold this pipe in place. यानी कि अगर मैंने इस पाइप को कहीं अटैच करना हो, कोई हुक लगानी हो इसके ऊपर, इसको कहीं पे मैंने अटैच, तो वो हुक कितनी फोर्स को उसको बेयर करना पड़ेगा, तो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए. Basically I need to know the force. Is the problem statement clear? Let's say I want to hook the pipe with a wall at this location. यहाँ पे मैं हुक लगाऊं और ये अगर ये मेरी वॉल है, तो इस वॉल के साथ मैंने इसको हुक करना है, तो ये हुक कितनी फोर्स बेयर कर सकती है, कितनी फोर्स आएगी इस हुक के ऊपर, वो फोर्स मैंने कैलकुलेट करना है. क्लियर? Yes, sir. क्योंकि हमारी जो पहली चीज हमें गिवन है, दैट इज दैट द फ्लो इज स्टेडी, तो हम जो पहली टर्म है मोमेंटम इक्वेशन, दैट इज पार्शियल बाय पार्शियल टी, उसको तो हम जीरो कर सकते हैं. ठीक है? सो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन राइटिंग दैट एफ force would be equal to the integral over the control surface v vector
into rho into v dot n dA, राइट? ऐसे ही होगा जी. Yes, sir. Now we'll have three components of the force, right? So three components of this equation, Fx, Fy and Fz. ऐसा ही है? Yes, sir. Yes, sir. But if we see the figure clearly, what is happening? That the flow is one dimensional. ऐसा ही है? Yes, sir. Yes, sir. और वो वन डायमेंशनल फ्लो किस डायरेक्शन में है? फिगर को देख के बता सकते हैं? Y direction. So it's only in the y direction. So we need to write the equation only for y direction, क्योंकि z डायरेक्शन में कोई फोर्स जनरेट नहीं होगी और x डायरेक्शन में कोई फोर्स जनरेट होगी. कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं हमारे पास फ्लो का, या कोई ऐसा वेट एक्ट नहीं कर रहा, कोई ऐसी बॉडी फोर्स एक्ट नहीं करी जो हमें z या x डायरेक्शन में कोई फोर्स दे. ऐसा ही है? Yes, sir. तो फ्लो की वजह से फोर्स है सिर्फ y डायरेक्शन में. सो दिस वी कैन राइट इट एज, दिस इज बेसिकली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. ठीक है? सो राइट इट एज f, that is the anchoring force Fa in the y direction. इसके अलावा कोई और फोर्सेस हैं? इस एंकरिंग फोर्स के अलावा कोई और फोर्सेस हैं? No, sir. फ्लो हो किस वजह से रहा है? The force is along y-axis. पानी फ्लो क्यों करता है? Pressure की वजह से. तो प्रेशर की फोर्स होगी तो फ्लो करेगा ना. ऐसे ही है? Yes, sir. So there will be a pressure force P1 A1 at the inlet and there will be pressure force P2 A2 at the outlet. नजर आ रही है? यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. Yes, sir. So we'll add these forces. डायरेक्शन इनकी आप खुद चूज करेंगे. P1 A1 प्लस P2 A2. ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखी हुई है, इसलिए इनके पॉजिटिव साइन के साथ लिख रहा हूँ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में. ये आपकी टोटल फोर्स है इन वाई डायरेक्शन. क्लियर? Yes, sir. दिस शुड बी इक्वल टू दी, अब अगर हम इस टर्म को देखें तो इट्स अ सिंगल इनलेट एंड सिंगल आउटलेट फ्लो. ठीक है? एरिया यूनिफॉर्म है, डेंसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं एज m डॉट इनटू v out minus v in, राइट? Yes, sir. सो इफ आई ब्रेक इट एज, उसी तरह से लिखा तो इसी तरह जाएगा कि v इनटू रो v डॉट n. तो इनलेट पे आ जाए, अगर पहली टर्म देखें हम यहाँ पे, v किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव y डायरेक्शन में, राइट? Yes, sir. तो v डॉट n क्या होगी? इनलेट पे v डॉट n वुड बी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? v डॉट n Positive. नेगेटिव. इनलेट है, v पॉजिटिव डायरेक्शन में है, n उसके ऑपोजिट है, तो v डॉट n विल बी नेगेटिव, राइट? Yes, sir. But v itself is in the positive direction, तो overall जो v into v dot n है that would be negative. ऐसा ही है? Yes, sir. So we'll have minus rho v square or v1 square into a1. ऐसा ही हो जाएगा जी इनलेट पे. Yes, sir. अब दूसरी टर्म पे आ जाते हैं. आउटलेट पे क्या है? v नेगेटिव डायरेक्शन में है, n भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो v डॉट n क्या हो जाएगा? Positive. पॉजिटिव. बट v itself अगेन नेगेटिव डायरेक्शन में Negative. है, so we'll have minus sign here, minus rho 2 a2 into v2 square. Clear? Since
रो इज कांस्टेंट फिक्स्ड है, ऐसा ही है। Yes, sir. वी इज कांस्टेंट फिक्स्ड है, ऐसा ही है। Yes, sir. एंड एरिया इज फिक्स्ड आल्सो, Yes, sir. so you can write it as minus rho v a with 2 times, right? क्योंकि रो 1 भी वही है, v1 भी वही है, a1 भी वही है। रो 2 इज इक्वल टू v1, रो 1 a2 इज इक्वल टू a1 एंड v2 इक्वल्स टू v1, ऐसा ही है। क्लियर? Yes, sir. जब इस इक्वेशन में अगर हमने कुछ अननोन है तो वो क्या है? प्रेशर 1 हमें नोन है, एरिया 1 हमें नोन है, प्रेशर 2 नोन है, एरिया 2 नोन है, डेंसिटी नोन है, वेलोसिटी नोन है, एरिया नोन है, ऐसा ही है। Yes, sir. अब आपने एक बात का ख्याल रखना है, देयर आर स्मॉल ट्रिक्स इन दीस प्रॉब्लम्स। द प्रेशर गिवन टू यू इज द absolute pressure. The absolute pressure. You need to convert it into gauge pressure. Clear? So P1 gauge would be equal to किसके इक्वल होगा गेज प्रेशर जी? Sir, absolute minus atmospheric. Yes, P1 minus 101.3 किलो पास्कल, ठीक है। दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह P2 को भी आप गेज में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। बाय सॉल्विंग यू विल गेट the F anchoring force, the anchoring force required to hold it in place। अगर साइन नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो फोर्स डायरेक्शन आपने अज्यूम की आपकी एक्चुअल फोर्स के रिवर्स में है। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. कोई क्वेश्चन इस प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व आप खुद कर लेंगे, नंबर्स आपने खुद डाल के सॉल्व कर लेना, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. इट्स क्लियर। दिस प्रॉब्लम इज योर होम असाइनमेंट। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, दिस इज योर होम असाइनमेंट, यू नीड टू सॉल्व इट योरसेल्व्स, ठीक है। उसी तरह की प्रॉब्लम है, एंकरिंग फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। सिंपली द यूनिट्स आर चेंज एंड द एरिया इज चेंजिंग, तो आपने इस चीज को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। Yes, sir. वी सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। एक 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 1 डायमेंशन से हटके। So basically you have a pipe that is having 2 openings, एक इनलेट है और इनलेट से गुजरने के बाद जो वाटर that is being discharged into 2 outlets, 2 nozzles, one is in the y direction and the one is horizontal and one is vertical, ठीक है। So water flows as 2 free jets from the T attached to the pipe shown in the figure. The exit speed is 15 meter per second। दोनों जो T's हैं उसके end पे जो speed है 15 meter per second। If the viscous effects and the gravity effects are negligible, determine the x and y components of force that the pipe exerts on the T। तो आपने x और y components of force कैलकुलेट करने हैं, कैसे करेंगे जी? एनी आइडियाज, एनी सजेशंस? सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये हमारा पाइप हो गया जी। फ्री बॉडी डायग्राम में अंदर क्या चीजें दिखाई जाती हैं जी? Sir, velocity की यस प्लीज बताएं बताएं। velocity की direction, n की direction फ्री बॉडी जो हमारे डायग्राम स्टैटिक्स में बनाई है कभी? yes sir बनाइए। क्या शो करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे?
सर वो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल The इंटरनल जब, forces, right? यस सर। तो इस फिगर में मुझे आप फोर्सेस बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे एक्ट करेंगे और कैसे एक्ट करेंगे? The force of the fluid on the pipe and the force of the pipe on the fluid. जी, सबसे पहले क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम फौरन क्या करते हैं? पहला स्टेप, we define the coordinate directions. ऐसे ही है, ये हमारी x डायरेक्शन हो गई और ये y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में हम कहते हैं जी fy फोर्स एक्ट कर रही है इसी लोकेशन पे, और x डायरेक्शन में हम कहते हैं जी fx एक्ट कर रही है। आउटसाइड से इस पाइप के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, दैट वुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया 2। अगर हम इसको लोकेशन 2 कह रहे हैं तो ये एरिया 2 हो जाएगा। लेट्स से दिस इज लोकेशन 2, दिस इज लोकेशन 1 एंड दिस इज लोकेशन 3। ठीक है, लोकेशन 1 पे भी इसी तरह हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज प्रेशर एटमॉस्फेरिक इनटू A1। और इसी तरह लोकेशन 3 पे भी हमारे पास एक फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया 3। क्लियर? ठीक है, समझ आ गई? यस सर। यस सर। यहाँ पे मेरी बात को और से सुनना है। फ्लो किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, राइट? यस सर। और फ्री बॉडी डायग्राम में इस चीज को, ये जो हमने सरफेसेस बनाए, इसको एज अ सरफेस ट्रीट करें फिलहाल के तौर पे। ये ना देखें कि एक ओपनिंग है, ठीक है, इसको एज अ सरफेस ट्रीट करें। तो जब एटमॉस्फेयर इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा तो इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, वो भी रिवर्स में एक फोर्स नहीं लगाएगा इस डायरेक्शन में? यस। यस सर। फोर P1, जी जी, हाँ। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास सरफेस 3 पे भी एक फोर्स आएगी, दैट वुड बी P3 into A3, and there will also be a force on surface 2, that would be P2 into A2। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस सर। बिकॉज ये जो डिफरेंस है P1 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ये फ्लो कॉज कर रहा है, सही है? अगर मैं ये कह दूं P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है तो फ्लो नहीं होगा, ऐसा ही है? यस सर। यस तो सर। दिस डिफरेंस इज कॉजिंग द फ्लो। तो अगर हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बता देते तो हम डायरेक्टली एक डायरेक्शन में फोर्स ड्रॉ करते, क्योंकि अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता रहे तो इसलिए हमने दोनों डायरेक्शन में फोर्स ड्रॉ की है। अब आप इक्वेशन लिखवा सकते हैं मुझे? इक्वेशन क्या बनेगी? अगेन वो एज्यूम कि हमारा जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है, तो फॉर द टाइमिंग हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो हो जाएगी, ऐसा ही है? I will be writing the equation in this form, that is integral over the control surface। अब हमने लिखनी होंगी किस तरह से इक्वेशन? डायरेक्शनल इक्वेशन, ऐसा ही है? यस सर। तो x डायरेक्शन में पहले इक्वेशन लिखेंगे हम, फिर हम y डायरेक्शन में लिखते हैं इसको। So x डायरेक्शन में क्या होगा? The velocity will be assumed that is along the x axis, so हम लिखते हैं कि x axis along the velocity component is u into rho। ये जो v है इसको हम अभी v रहने देते हैं because it's a vector in the not n। v भी u के इक्वल ही होगा, ऐसे ही है? यहाँ पे भी हम इसको सिर्फ u कंपोनेंट ट्रीट कर रहे होंगे, ठीक है? u dot n dA, this should be equal to all the forces, sum of all the forces acting in the x direction। So the first force is this P1 A1,
So it is in the negative x direction, so write it minus P1 A1, and we see that P atmospheric into A1 is acting in the positive direction. So overall के तौर पे लिखें तो it would be P atmospheric. So हम P ATM से represent करें P atmospheric minus P1 into A1, right? The other force in the x direction is P3 A3 minus P atmospheric into A3, ऐसे ही है, plus P3 minus P atmospheric into A3, and the last force which is acting in this direction is Fx plus Fx. Clear? Yes, sir. अब हम लेफ्ट साइड को पहले सिंप्लीफाई करते हैं. अगेन एरिया इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, सो वी कैन राइट इट एज जो इनफ्लो पे वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, जो आउटफ्लो पे वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा. साइन आपको समझ आ गए होंगे. सो राइट इट एज माइनस u1 ρ1 अगेन u1 into a1 plus u3 ρ3 u3 into a3, and this should be equal to the फोर्स इक्वेशन जो मैंने सारी यहाँ पे लिखी है, ऊपर ये वाली जो फोर्स इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी, ये सारी की सारी अगेन यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है. Yes, sir. अब यहाँ पे थोड़ी सी आपने चीज समझ ली. P1 मैंने क्या कहा है, कौन सा प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, ऐसे ही है. Yes, sir. एंड एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, अगर मैं P1 को लिखूं तो इट शुड बी इक्वल टू P1 गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक, ऐसे ही है. Yes, sir. So what will happen, कि जो टर्म है मेरे पास P एटमॉस्फेरिक माइनस P1, that would convert to P atmospheric minus P1 gauge minus P atmospheric, ऐसा ही है. So atmospheric pressure will cancel with atmospheric pressure, and this term would be equal to minus P1 gauge. Clear? Yes, sir. So we'll write this as minus P1 gauge into A1. Similarly यही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे for the second term P3 minus P atmospheric. So P3 would be equal to P3 gauge plus at P atmosphere. So the term P3 minus P atmosphere would be equal to simply will just be P3 gauge plus P atmosphere minus P. So that would be equal to P3 gauge. So P3 is already written in gauge form. Clear? Slab plus P3 gauge into A3 plus Fx. समझ आ गई जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो? No, sir. अब थोड़ा सा आपने बर्नौली इक्वेशन को ज़हन में लाना है. क्वेश्चन इज सेइंग दैट these two are free jets, यानी जो 3 और 1 पे जो काम 2 और 3 पे जो काम हो रहा है that is being as free jet.
तो अगर फ्री जेट है तो P3 क्या होगा? P3 की गेज वैल्यू क्या होगी अगर ये फ्री जेट है? जल्दी से बताएं, शाबाश आपको पता है। फ्री जेट्स में क्या होता है? The pressure at a free jet is equal to the atmospheric pressure, and the atmospheric value of the gauge pressure is, शाबाश बताएं। थोड़ा सा बर्नौली इक्वेशन को ज़हन में लाएं। P3 गेज वैल्यू क्या होगी? सर जीरो होगी। Yes, if it's a free jet, so this value should be 0. Clear? For free jet. P1 हम 0 कर सकते हैं? यस सर। नहीं कर सकते। P1 के ऊपर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन कि P1 जो फ्री जेट है या P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 के ऊपर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, so we cannot say that P1 is 0. Clear? So the final equation जो मैं अभी लिख रहा हूँ आपके सामने, that would be minus U1 square into A1 plus U3 square into A3 into density constant है ρ1 is equal to ρ3, तो हम इसको simply ρ लिख रहे हैं, should be equal to minus P1 gauge plus Fx. Clear? P1 gauge into A1. ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। Now we have one equation and two unknowns. ऐसा ही है? U1 हमें पता है, A1 पता है, U3 पता है, A3 पता है, ρ पता है, A1 पता है, but P1 gauge is unknown, Fx is unknown. How to solve equation that is having two unknowns? ये कैसे सॉल्व करेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। अल्लाह अकबर, जब हमारे पास एक इक्वेशन हो सर तो सॉरी सॉरी सर, सर किसके साथ पहले एक साइमल्टेनियसली सॉल्व इलेक्ट्रॉन करेंगे? है सर। पहले जो सही साइड में इक्वेशन है, हम लोग अगर इससे वो निकाल लें P1 गेज की वैल्यू। इससे कैसे आएगी P1 गेज की वैल्यू? इसमें तो अगेन हमारे पास P1 भी अननोन है और P1 गेज भी अननोन है। प्रॉब्लम में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे गिवन है जिससे हम एक अननोन और कैलकुलेट कर सकें? एक तरफ से फ्लूइड आ रहा है और फिर वो जाके डिवाइड हो रहा है दो साइड्स में, ऐसा ही है? जी सर। अगर ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो फिर क्या होना चाहिए? Q1 should be equal to Q2 plus Q3, ऐसा ही होगा? यस सर। Q2 और Q3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, because we यस know A2, we know V2, we know A3, we know V3, right? और हमें A1 भी पता है, V1 हमें अननोन है। कैन वी गेट V1? yes we can get V1 if we rearrange this equation, सॉल्व करें तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सर। so we see that A2 कितना है जी हमारे पास? it is 0.3 multiplied by velocity which is 15 plus 0.5 multiplied by velocity which is 15 divided by 1 which is the area of the, so it is 12 meter per second। ठीक है, तो V1 आ गया हमारे पास। क्लियर? यस सर। अब अगर हम 1 और 3 के दरमियान बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करें, दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.3, तो क्या बर्नौली इक्वेशन बनेगी?
बता सकता है? Apply Bernoulli equation between 1 and 3. G. That would be P1 gauge divided by rho plus V1 square by 2. एलिवेशन लिखने की जरूरत है मुझे, बिकॉज इट्स अ हॉरिजॉन्टल फ्लो, एलिवेशन चेंज नहीं है, तो इसलिए हम एलिवेशन की टर्म को कैंसिल करना है हमने बाद में, इसलिए मैं दोनों तरफ नहीं लिख रहा. Should be equal to P3 gauge divided by rho plus V3 square by 2. Clear? समझ आ गई? Yes, sir. अगेन P3 इज अ फ्री जेट फ्लो, तो P3 को हम जीरो कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है. और इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें अगर, तो वी कैन गेट P1 gauge. P1 gauge would be equal to rho into V2 square minus, sorry, V3 square minus V1 square divided by, ऐसी इक्वेशन बनेगी जी. Yes, sir. Density of water is 1000 and V3 is 15. 15 square minus 12 square whole divided by 2. 40,500, और इसको अगर हम 1000 से फर्दर डिवाइड कर दें, it would be 40.5 kilopascals. So P1 gauge is 40.5 kilopascals. तो जो हमारी इक्वेशन के साथ मसला था सबसे बड़ा, कि हमारे पास दो अननोन्स थे और एक इक्वेशन थी, तो उसको हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ बर्नौली इक्वेशन. अब हमें P1 G भी नोन हो गया, राइट. तो अब एक ही इक्वेशन है और एक ही अननोन है. क्लियर? Yes, sir. तो अब इसके अंदर P1 G की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास fx आ जाएगा, ठीक है. सॉल्व कर लेंगे इसको फर्दर. Yes, sir. y डायरेक्शन के ऊपर क्या होगा? इन y डायरेक्शन दिस इनलेट विल नॉट कंट्रीब्यूट, ऐसा ही है. अगर मैं आपसे कहूं y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? विल राइट द y कंपोनेंट एज, इसको मैं ऊपर करके छोटा सा लिख रहा हूं यहाँ पे, यहाँ पे इंटीग्रल कंट्रोल सरफेस रो v into v dot and dA should be equal to fy, which is in the positive direction, P2 minus PATM plus P2 minus PATM into A2. यही क्वेश्चन बनेगी जी. ऐसे ही है. Yes, sir. अब P2 minus PATM is again gauge pressure, right? ऐसा ही है. ऐसा ही है ना जी. Yes, sir. और पॉइंट 2 इज अगेन अ फ्री जेट, तो अगर ये फ्री जेट है तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0. जीरो हो जाएगी. सो अब लेफ्ट साइड पे हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक आउटलेट है. वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो v डॉट एन पॉजिटिव होगा, ठीक है. v इटसेल्फ पॉजिटिव होगा, तो ये ओवरऑल टर्म जो पॉजिटिव आ रही है. सो विल हैव रो v2 स्क्वायर इनटू a2 इक्वल टू fy. ठीक है, समझ आ गई?
यस सर। रो भी नोन है, V2 भी नोन है, A2 भी नोन है, तो Fy सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि फोर्स का वेक्टर कैलकुलेट करें और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करें, कैलकुलेट कर लेंगे? क्या होगी फोर्स वेक्टर किस तरह होगा? Fx इक्वल टू F इक्वल टू Fx प्लस Fy प्लस Fyj, राइट? और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो दैट वुड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ Fy by Fx, ठीक है? और अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, ठीक है?